अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का सेकंड लेक्चर करेंगे। इन दिस lecture we will study some more application related to integration. First, let me give you the review of last lecture. In the last lecture we have studied density and mass of inhomogeneous lamina. पहले मैं आपको बता दूं कि लेमिना क्या था। लेमिना बेसिकली टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को कहते हैं। We have also considered that lamina to be inhomogeneous, जिसका मतलब ये होगा कि density of that object will be variable of some will be the function of some variables. उस लेक्चर में हमने डेंसिटी और मास कैलकुलेट किया था inhomogeneous lamina का. Then onward we studied center of gravity of the same object, same type of objects in homogeneous laminas. Today we will find centroid of a lamina, center of gravity and centroid of the solid. Solid के जब हम जिक्र करते हैं तो इसका मतलब ये होगा this object is a three-dimensional object. Three-dimensional object है. The center of gravity of a homogeneous lamina is called the centroid of the lamina. First, जो हम लोगों ने center of gravity calculate किया था in the last lecture was x bar and y bar, और जो उसके formulas थे those were the integral over region R, x. This delta was representing the density dA, where this integral was representing the mass of that object. इसी तरह y bar भी जब कैलकुलेट करते हैं तो डेंसिटी और मास की सपोर्ट लेते हैं। मगर जब होमोजेनियस ऑब्जेक्ट की तरफ आएंगे तो डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा, ये जो डेंसिटी यहाँ पर एज अ फंक्शन मल्टीवैल्यूड फंक्शन के फॉर्म में अपीयर हो रहा है, this will no more be a function of different variables. ये एक कांस्टेंट होगा, just like 3, 2 or whatever. So ये होमोजेनियस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो डेंसिटी होगी that will remain fixed at any point. Centroid of a region R. The centroid हम बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की एक्स बार वाई बार, सेंट्रॉइड के लिए भी वही रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे क्योंकि सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम चीजें हैं. बट द डिफरेंस इज जब हम सेंट्रॉइड का जिक्र करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट था वो होमोजीनियस था, और जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जिक्र करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट था वो इनहोमोजीनियस ऑब्जेक्ट. सेकेंड, सोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम सेंट्रॉइड कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी कांस्टेंट फंक्शन होगी, और जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी. दैट विल बी अ फंक्शन, मे बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन और अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन. द centroid is a geometric property of a region R and is given by the following formulas. ये बेसिकली यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करते हैं इनहोमोजेनियस ऑब्जेक्ट के लिए डेंसिटी डेल्टा आती है. अब डेल्टा की जो भी वैल्यू होगी फॉर 1, फॉर 2, फॉर 3, जो भी वैल्यू आएगी, कांस्टेंट नंबर विल बी आउट ऑफ दीज इंटेग्रल्स. फॉर एग्जांपल अगर 3 वैल्यू आती है तो इट मे लीव द इंटेग्रल, वो बाहर आ जाएगा. सो जो इंटेग्रल सॉल्व करना है, इट इज सिंपली दिस इंटेग्रल where the density, there is no any function here, only we will have x into dA, और जो नीचे हमारे पास पोर्शन आ रहा है जनरली अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इट वाज द मास, ये मास की रिप्रेजेंटेशन है. और here we are using the word area of the region R. डबल इंटेग्रल नॉर्मली हमने स्टडी किया था कि डबल इंटेग्रल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, बट व्हेन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज आइडेंटिटी, तो हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी डबल इंटेग्रल की, इट विल गिव अस द सेम रिजल्ट, सेम वैल्यू as that of area of R. So we can say that this double integral with 1 as a function will give us value of area of R. Similarly, we can calculate y bar
वी हैव टू सॉल्व दिस फंक्शन, इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इट वाज मास, और इट कैन आल्सो बी रिटन एज दिस डिनोमिनेटर इज एज एरिया ऑफ आर, और ये इंटीग्रल सॉल्व होगा. Now let us move toward the first example. Find the centroid of origin in the first quadrant. First quadrant means x will remain positive, y will remain positive, and is bounded above by the line y equals to x and below by the parabola y equals to x square. स्केचिंग की वीडियो अगर आपने देखी है तो यू कैन इजीली स्केच y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x स्क्वेयर, आसानी से स्केच कर सकते हैं, मगर फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैं आपको बताता हूँ कि y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू x स्क्वेयर क्या था. इफ यू आर हैविंग x axis and y axis, this line passing through the, ये लाइन बेसिकली ओरिजिन से पास कर रही है, passing through the origin is named as y equals to x, and if we are having y equals to x square, x axis y axis, तो it will be symmetry about positive y axis, तो ये रीजन बनता है. अगर इन दोनों लाइंस को कंबाइन करें, ये दोनों ग्राफ्स को कंबाइन करें, तो हमारे पास जो ज्योमेट्री बनती है वो इस किस्म की बनती है. दिस इज द बेसिकली सिलेक्टेड एरिया जो यहाँ पर ज्योमेट्री में शो किया गया है. नाउ इफ यू आर हैविंग दिस एज अ ज्योमेट्री, इसको हम यूज करते हैं. द नेम ऑफ द लाइन इज y इक्वल्स टू x, नेम ऑफ द कर्व इज y इक्वल्स टू x स्क्वायर. पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है? बाय simultaneously solving these two equations we can get this point 1, 1. We can also have this point, this is origin. Integral, we are supposed to find the centroid. Centroid में जो डेंसिटी फंक्शन हम यूज करेंगे, it is simply 1. So area of the region can be calculated as by using this integral, where dy, if you want to write the integral limits of dy, sketch a vertical line leaving the region. In this part, basically the lower limit where the value of y is x square. When the sketched line leaves the region, the value of y is equals to x, it will be the upper limit. For the limit of x, मैंने आपसे ये कहा था, we have to check horizontally. जो most left पे point होगा और जो most right पे point होगा, that will be the lower limit and the upper limit. In other words, जितने भी points आए हैं उन सब में जो x की सबसे छोटी वैल्यू है और जो सबसे बड़ी वैल्यू है, take these two values, select one, the smallest one as the lower limit and the highest one will be as the upper limit. Integral complete. Once the integral is complete, then you have to just solve the integral. 1, integrate with respect to y, you will get y. y से इंटीग्रेट करेंगे तो y आएगा, और y में अपर लिमिट पुट करें minus the lower limit, you will get x minus x square. Now you have to integrate this function, new function, with respect to x. x से इंटीग्रेट करें by the power rule, it will be x square by 2. This will be x cube by 3. You will get this number. Applying the limits, upper limit minus the lower limit, 1 by 6 is the answer. Here we are calculating mx. While calculating mx, we have y here. Following the same limits, x square to x, 0 to 1, dy dx. First we will integrate y with respect to y, it will be y square by 2, 1 by 2 भी आएगा साथ. y में वैल्यूज पुट कर दें, it will be x square, x power 4, here 2 लिख दिया है साथ, ये जो बाहर मैंने लिखा था it could be written here. Now I have to integrate with respect to x.
x से इंटीग्रेट करता हूँ, अगेन पावर रूल अप्लाई होता है, दिस एक्स स्क्वेयर विल बी एक्स क्यूब बाय 3, 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6, x4 will be x5 by 5, multiplying by 2 it will be 10, applying the upper limit minus the lower limit, with a small simplification you will get 1 by 15. Now in the next slide I will calculate m of y. M of y will be calculated by using the same limits 0 to 1, x square to x. यहाँ पर y लिखा है, y की बजाय x होगा, सेम इंटेग्रल्स होंगे. If you want to switch the integrals, आप dy dx लिखना चाहते हैं तो आपको इसी ज्योमेट्री से नई लिमिट्स फाइंड आउट करनी पड़ेंगी. Here my 0 to 1 x square to x dy dx, integrating with respect to y, I will have this y, applying the upper limit minus the lower limit, I will get this as a function. Again integrating with respect to x, it will be x cube by 3, x4 by 4, upper limit apply करें minus lower limit apply करें, 1 by 12 will be the answer. X bar, first component of the centroid, using the representation as used in finding the center of gravity, m of y divided by m, or m of y divided by area of the region, I will get 1 by 2. Similarly, we can find y bar, dividing the terms, I will get 2 by 5. The centroid is the point 1 by 2 comma 2 by 5. Now let us consider one more example related to centroid of a geometry. Question is, find the centroid of the semicircular region in the figure. The figure is given a semicircle, upper half of the semicircle. अगर मैं यहाँ से semicircle की इक्वेशन बनाना चाहूँ तो it is simply y square, because the circle is at origin, y square x square and the radius given is a square. इस सिंपल इसकी rectangular coordinate system में इक्वेशन है, but I will try to solve it by using the concept of polar coordinate system. By symmetry, x bar is equals to 0, since the y-axis is obviously a line of balance. That means if we can see the geometry, x-axis के about दूसरी साइड पे ज्योमेट्री नहीं है, so it is not possible कि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस जगह पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंसिंग पॉइंट होता है, वो सेंटर में नहीं हो सकता एक्स एक्सिस पे. सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड मस्ट बी ऑन दिस लाइन जो बाइसेक्ट कर रही है अपने रीजन को, रीजन के हाफ से गुजर रही है, उसके ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड होता है इन होमोजेनियस ऑब्जेक्ट का. सो बिकॉज ऑफ दैट वी कंसिडर्ड x bar equals to 0. Now what we have to do is we have to calculate y bar. Y bar का जो rectangular coordinate system में formula था, that was simply double integral over a region or any domain by dA, area of a region. Area of a region अगर आप इसे डबल इंटेग्रल की हेल्प से सॉल्व करना चाहते हैं तो डबल इंटेग्रल की हेल्प से सॉल्व कर लें, इट इज़ नॉट अ बिग डील. और अगर आपको एरिया ऑफ अ सर्कल पता है पहले से तो वी कैन यूज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल. रेडियस इज ए, एरिया इज नॉर्मली पाई आर स्क्वेयर, सो पाई आर स्क्वेयर कुड बी रिटन एज पाई ए स्क्वेयर, 1 by 2 से डिवाइड कर दिया, सो इट इज हाफ द एरिया ऑफ अ सर्कल. रिमेनिंग इज द डबल इंटेग्रल फॉर mx, जिसे हमने mx से डिनोट किया था. आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप तो चाहे इसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से सॉल्व करें, द सेकंड ऑप्शन इज आल्सो योर्स, कि आप इसे पोलर कोऑर्डिनेट से सॉल्व करें तो भी कर सकते हैं. मैं इसे सॉल्व करता हूं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलर इंटीग्रल्स. पोलर इंटीग्रल्स में सबसे पहले
मैं डी ए को रिप्लेस करता हूँ एरिया इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दैट विल बी आर डी थीटा। वाई विल बी रिप्लेस्ड बाय आर साइन थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट्स में मैं इसलिए आया हूँ बिकॉज सर्कुलर शेप की इंटीग्रल बिकॉज सर्कुलर ऑब्जेक्ट का इंटीग्रल पोलर कोऑर्डिनेट में सॉल्व करना कंपैरेटिवली इजी कंसिडर किया जाता है। फॉर अ सेमी सर्कल radius starts from 0 and reaches to the limit pi, और रेडियस की जहाँ तक बात है that will be from 0 to this point A। किसी भी जगह पर डिस्टेंस चेक करें, हर पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से A की इक्विवेलेंट है। सो रेडियस इज फ्रॉम 0 to A और एंगल थीटा इज फ्रॉम 0 to pi। और अगर आप इसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करना चाहते हैं तो यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेक्टेंगुलर इंटीग्रेशन। रेक्टेंगुलर इंटीग्रेशन से सॉल्व करें या पोलर से सॉल्व करें, हमारे कोऑर्डिनेट्स पे कोई फर्क नहीं आएगा। द वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट विल बी सेम। सिंपली इंटीग्रल ऑफ आर, सॉल्व हम आर को करेंगे, आर स्क्वायर था, आर क्यूब बाय 3 हो जाएगा बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर रूल। अप्लाइंग द अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट, इट विल बी ए, लोअर लिमिट 0 है तो इट विल बी ए क्यूब, होल सिस्टम विल बी अ कांस्टेंट, वो इंटीग्रल से बाय। Now we will integrate sin theta. Integral of sin theta will be cos theta minus cos theta, applying upper limit minus the lower limit. This is the final answer. हमने ये डिस्कस किया था कि x bar equals to 0 है and y bar will be this integral. अगर आप ये चाहते हैं कि x bar को आप इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, तो अगर आप x बार की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो भी इस तरह का इंटीग्रल बनेगा, सॉल्व करेंगे तो वो प्रॉपर आंसर आएगा, जीरो नहीं आएगा। इट डजेंट मीन कि सोल्यूशन से आंसर कुछ और आता है और सिमेट्री के कॉन्सेप्ट से आंसर कुछ और आता है। इसका मतलब ये है कि जब आप सोल्यूशन करते हैं तो फिर आप सेमी सर्कल के अकॉर्डिंगली इसे सॉल्व नहीं कर रहे, फिर आप कंप्लीट सर्कल के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर रहे हैं। और जब आप सेमी सर्कल के कॉन्सेप्ट पे आते हैं देन यू हैव टू यूज दिस सिमेट्री काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड ऑफ अ सॉलिड। जब भी हम सॉलिड का जिक्र करेंगे तो इससे मुराद जब भी हम सॉलिड का जिक्र करेंगे इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। जैसे कि ज्योमेट्री में भी एक्सप्लेन किया गया है, इट इज अ 3 डायमेंशनल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। डेंसिटी नॉर्मली रिप्रेजेंट की जाती है मास पर यूनिट वॉल्यूम से। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। उसी डिस्कशन को जो लैमिना के केस में हमने अपनी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन को प्रोसीड किया था और इंटेग्रल्स तक पहुंचे थे, उसी तरह की डिस्कशन को अगर फॉलो करें तो फाइनल जो हमारे पास इंटेग्रल बनता है इट इज़ रिलेटेड टू मास ऑफ दिस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल्स टू दिस थिंग। लैमिना में it was related with the area. Here we are having the relation related to the triple integrals. The formulas for center of gravity and centroid are center of gravity पहले डिस्कस हो चुका है ये कि for the inhomogeneous object we have density as a function of x, y and z। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ट्रिपल इंटेग्रल है, सो मल्टी वैल्यूड फंक्शन 3 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। सेम इज द केस वी कैन कैलकुलेट y बार, z बार। और जब हम आ जाते हैं सेंट्रॉइड की तरफ, इस केस में हम डेंसिटी को एज अ कांस्टेंट लेते हैं। कांस्टेंट में हम लोग एज आइडेंटिटी यूज करेंगे 1। दिस ट्रिपल इंटेग्रल विल बी कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम्स ऑफ दैट लैमिना, वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड। Starting our first example is
related to centroid of a solid. Find the centroid of the tetrahedron in the first octant enclosed by the coordinate planes and the plane x plus y plus z equals to 1. It is a centroid, that means the density will be identity 1 over the region G. First we have to write the integral of z. Z की इंटेग्रल यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट होती हैं. z इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, वो डायरेक्ट आ गई. अब रहेगी बात dy और dx की. dy dx means if you put z equals to 0, this equation will be x plus y equals to 1. That means in xy plane ये जो हमारे पास प्लेन है वो कन्वर्ट हो जाएगा x plus y equals to 1. If we sketch x plus y plus 1, और अगर आपको ने वही स्केचिंग थोड़ी सी आपको आती है तो it means if we sketch x plus y equals to 1, it will be simply a straight line from the second quadrant toward the fourth quadrant bisecting y-axis and x-axis. Question की डिमांड थी related to the first octant. That means here we will have a first quadrant. This is our selected region. dy पहले है, so we can construct a vertical line in the upward direction. It will enter a region where the value of y is 0, so 0. It will leave the region where the value of y is 1 minus x, so it is 1 minus x. Related to the limits for x, minimum value is 0 and the maximum value is 1, so from 0 to 1. Once the integral is complete, just we have to solve the integral. First integrate with respect to z, applying the upper limit minus the lower limit. Limits apply करने के बाद then we will integrate with respect to y. y से integrate कर लें. Again following the same procedure, upper limit minus the lower limit. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में कभी कंफ्यूज ना होइएगा. अगर इन केस कभी भी कंफ्यूजन जनरेट हो जाए तो आप इसे सिंपली यूं कर सकते हैं, पूरे के पूरे फंक्शन में अपर लिमिट अप्लाई करें माइनस फिर पूरे का पूरा फंक्शन लिखें और द लोअर लिमिट. देन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स से इंटीग्रेट किया, ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस नीचे वाली लिमिट अप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर. अभी हम लोगों ने सिर्फ वॉल्यूम कैलकुलेट किया है और जो ओरिजिनल फार्मूला था, इफ यू आर सपोज टू कैलकुलेट एक्स बार, तो जो हमारे पास ओरिजिनल फार्मूला था इट वाज द ट्रिपल इंटीग्रल dv and here we are having the volume and the variable x. यहाँ पर x है, अगर हम x से कैलकुलेट कर रहे हैं, x बार कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रॉइड. अभी तक हमने सिर्फ कैलकुलेट जो किया है इट इज सिंपली वॉल्यूम. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज फॉर x बार वी हैव टू कैलकुलेट दिस इंटीग्रल, फॉर y बार इस तरह का रिस्पेक्टिव इंटीग्रल, फॉर z बार इसी तरह का रिस्पेक्टिव इंटीग्रल. इस केस में z बार भी आएगा क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है. हियर वी आर कैलकुलेटिंग x बार. x बार में यहाँ पर जो नोटेशन यूज की गई है दैट इज m ऑफ yz. जब x dv यूज करेंगे the notation is y of z. Integrating, the limits will remain the same. First integrate with respect to z, apply the limits, then integrate with respect to y. Following the same pattern, integration and applying the limits, finally you will get x bar. Similarly, y bar, v जो हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट किया है वो अप्लाई कर देंगे और y बार का जो रिमेनिंग इंटीग्रल है उसे उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे जिस पैटर्न पे हम लोगों ने
x बार कैलकुलेट किया है और फाइनली वी विल गेट y बार। इसी तरह वी कैन आल्सो कैलकुलेट z बार। z बार के केस में m को xy का नाम देंगे बिकॉज वी आर यूजिंग द वेरिएबल z हियर। The v volume integrating with respect to z, it will be z square by 2। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। अगर फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए इट डजेंट मीन कि कुछ गड़बड़ हो रही है। सिंपल जस्ट चेक कर लें इफ एवरीथिंग इज गोइंग फाइन सो प्रोसीड। देन वी विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y। इसमें y नहीं है सो इट विल बी सिंपली y स्क्वेयर y क्यूब बाई 3 हो जाएगा। इसमें y स्क्वेयर बाई 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल, there is no y here so it is simply y। it will be y square by 2, 2 cancel and it is simply y। applying upper limit minus the lower limit and you can calculate z bar। finally the centroid x bar, y bar and z bar minus 11 by 4, 5 by 96, 1 by 96। now let us move toward one more example. Example is the solid that has the density delta xyz equals to x of z and is enclosed by pi equals to 9 minus x square, where the value of x is greater than equal to 0, x equals to 0, y equals to 0 and z equals to 0 and z equals to 1. Find its mass and center of gravity. We have to calculate mass and center of gravity. The initial part is that first we have to sketch the region. The curve we have is 9 minus y equals to 9 minus x square. It is a parabola, symmetry about y-axis. X is having a negative sign, so it is directed toward the negative of y-axis. यहाँ पर 9 है, it means it will intersect the y-axis at the point 9. तो यहाँ पर मैंने इसे sketch किया है. It will intersect the y-axis at the point 9. It will intersect the x-axis when you put y equals to 0. तो x की value plus minus 3 आती हैं. It will intersect the x-axis at plus 3 and minus 3. But the condition given is that our region must be above this origin. That means x-axis must be positive. So जो final region हमारे पास select होता है, it is this one. यहाँ से यहाँ तक. We cannot move along the negative side because we have a condition x must be positive. इस रीजन का अगर मैं इंटेग्रल जनरेट करता हूँ, ट्रिपल इंटेग्रल, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं इस दफ़ा ऑर्डर को चेंज कर देता हूँ. मैं ऑर्डर इंस्टेड ऑफ डी ऑफ जी, डी ऑफ एक्स, डी ऑफ आई या जी को पहले रखने के बजाय जी को लास्ट में रखता हूँ. उसकी वजह क्या है कि जी मेरे पास गिवन है इन अ सिंपल फॉर्म. जी की वैल्यूज 0 to 1 होंगी. ये बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो वाली कंडीशन है. सो जी को इस वक्त मैं किसी भी पोजीशन पे रख सकता हूँ. इस वक्त मुझे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की जरूरत नहीं. सो आई पुट जी एट द लास्ट प्लेस. द लिमिट ऑफ जी इज फ्रॉम 0 to 1. रहेगी बात dy एंड dx की. dy और dx xy प्लेन के पॉइंट्स होंगे. xy प्लेन की स्केचिंग है which I have made here. For dy dx, I have to sketch a line vertically in upward direction. The line will enter a region. वहां पर जो y की वैल्यू होगी that will be the lower limit. The line will leave the region. वहां पर जो y की वैल्यू होगी यहाँ पर
कर्व का नाम y इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, इस सारी कर्व का। सो यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी दैट विल बी द अपर लिमिट। रहेगी बात x की। फॉर द केस ऑफ x should be from -3 to +3, but the problem is we have a condition that x must be greater than or equal to 0, so it will be from 0 to +3। ये हमारे पास इंटीग्रल कंप्लीट होता है। The density function given was x of z. If I put the value of the density function, it will be a complete integral. यहाँ पर मैंने relation for m लिखा है, mass, I have to calculate mass as well as the center of gravity. इंटेग्रल मैंने कंप्लीट कर दिया है, स्केचिंग मैंने शो कर दी है। नाउ इट इज योर जॉब टू कंप्लीट द क्वेश्चन। इंटीग्रेट दिस फंक्शन, फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, जो आंसर आएगा लिमिट्स पुट करें, देन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, फाइनली इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z, m की वैल्यू, द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट आपके पास आ जाएगी। आफ्टर फाइंडिंग द मास यू हैव टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पर मैंने फार्मूलाज जो पहले शो किए थे दोबारा शो कर रहा हूँ। x बार, y बार, z बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कंपोनेंट्स हैं। x बार कैलकुलेट करेंगे, दिस इज द बेसिक फंक्शन। जहां तक लिमिट्स की बात है, यू विल अप्लाई द सेम लिमिट्स हियर बिकॉज वी आर फॉलोइंग द सेम ज्योमेट्री, सो वी विल हैव द सेम लिमिट्स। सिमिलरली यू हैव टू कैलकुलेट y बार एंड z बार। समरी ऑफ द लेक्चर, सेंट्रॉइड, जब भी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जिसकी डेंसिटी फिक्स होगी, उसे होमोजेनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। होमोजेनियस ऑब्जेक्ट की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते हैं उन्हें हम सेंट्रॉइड कहते हैं। होमोजेनियस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फिक्स होती है, सो यहाँ पर हम उस डेंसिटी को इतनी वैल्यू नहीं दे रहे, दैट डेंसिटी कुड बी आउट ऑफ द इंटीग्रल। सो जो पोर्शन सॉल्व करने का होता है वो ये हमारे पास पार्ट बनता है फॉर x कंपोनेंट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड फॉर y कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ होमोजेनियस लेमिना। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट होगा। जब कभी भी हम लेमिना की बात करते हैं तो वी विल हैव डबल इंटीग्रल। जब कभी भी हम सॉलिड की बात करेंगे वी विल हैव अ ट्रिपल इंटीग्रल। ट्रिपल इंटीग्रल में अगर हमारे पास इनहोमोजेनियस ऑब्जेक्ट होगा, दैट मीन्स कि उसकी डेंसिटी वेरिएट करती है, वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती है, देन वी विल कॉल इट एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट होमोजेनियस ऑब्जेक्ट होगा, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा और होमोजेनियस भी होगा, then that center of gravity will be named as centroid of that object. Mass and volume, they both are the same kind of things. अगर आप इसके formulas को relate करते हैं, mass और density is equals to mass per unit volume, उस formula से अगर आप follow करते हैं तो ये m is almost same as that of v. So exercise 14.8, solve these are the questions related to the topic of the lecture. Here you have to solve the question and find centroid of the solid. In these questions you have to find mass and center of gravity. इनमें से क्वेश्चन नंबर 28 मैंने सॉल्व कर दिया है। जो लास्ट स्लाइड पे मैं सॉल्व कर रहा था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 28, y equals to 9 minus x square. We have also these curves. इसी पैटर्न के ऊपर आपके बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। अगर आपको स्केचिंग अच्छी आती है तो आई थिंक there will be no issue in solving these questions. Just important part is you have to write the correct integral before starting the question. Thank you very much.